Wow. So this is the family, and there is an extended family sitting there. A lot of people which I am going to talk about them later on. Thank you so much. We'll surely call everybody on stage. But Dadaji and the entire family, I want you to please have कृपया विराजमान हो जाएं, so that हम आपसे कुछ बातचीत करें और हमारी जो मीडिया फेटर्निटी है वो भी एक्साइटेड है बहुत सारे सवाल लेके और बट उससे पहले एक दो सवाल जो मैं पूछना चाहूंगा. So we have यूवी कथा दादाजी को पहले पायलागू आशीर्वाद ले लें. He is a big man financially and otherwise तो खैर नहीं. And yes, I think one question, I'm sure media fraternity family members would definitely have in their heart. And दादा सवाल आपसे है और I'm sure पूरा देश जानना चाहता है. The whole nation wants to know. You've acted, you've of course produced, and you've launched many, newcomers. अपने पहला मौका दिया ना सिर्फ एक्टर्स को, फिल्म मेकर्स को, डायरेक्टर्स को, मगर पहली बार इतिहास में ऐसा होने जा रहा है कि you're producing a हिंदी टेलीविजन शो. So आखिर क्या चीज आपको खींच के लेके आई that you're coming up with this very different, one of the upcoming Gen Z show on Star Plus? Let me be very honest. Please don't call me producer. These are the people who are sitting here as the producer of this particular show. Wow. I'm part of this team. I never consider myself as a producer because end of the day I've been working for the last 40 years and what we really learned about it is a bit of acting and I think that's what we have been doing for the last 40 years and with your blessing I have completed around 348 films as an actor. So I think I will love to call myself as an actor than more than a producer. Yes, if you talk about production, it's my first Hindi production in a way, but it's not that because my dad has been working in Hindi film from 1960 from Bisalwa. So my connection with Hindi industry is nothing new. And now all over the world, all over the country, people are talking about Pan India. So why not? Why Pan India is only for film or Pan India is only for OTT? It has to be for television because we have a lot of talents all over the country. And I think television reach is high. It's more. So I think the talent from Bengal, from Marathi, from Punjab, from Gujarat, everybody can come and do television. So that's a kind of a thought we have thought and thanks to Star Plus. So as we just spoke to Rakhi, she is one of the finest storyteller we have. So that's I think is the concept to come to Hindi and do some good work. And my association with Star was very long. I must say that I think in Bengali especially, I'll say that Star Jalsha had produced a show where my company, NIDS Creation, was the producer. And I was blessed that that was a television serial show was created and directed by late Ritu Pondo Ghosh, which was a record. Wow. So I have a huge, long relationship with Star family. And I think we are looking forward to do something. I'm not saying it is, kabhi nahi dekha, ye hota nahi kabhi. Everybody says we are doing something which has never happened. Cinema सबने कहीं ना कहीं एक ही चीज बना दिया. But we are trying to do something which is fresh, which is something little meaningful, which, what I think when we produce, we try to do something which is running, like this kind of a thing. I think the entire team is trying to do something which is something different from the regular show, something little real, something which is close to your heart. And as we are saying, this is a show with a lot of senior people and it's a show with a lot of younger people. So I think it's a very refreshing and very different kind of a show. Indeed. Thank you. Sir, very nicely said. I think ये सवाल सबके माइंड में था मगर एक सवाल और है, I think and you said people all across India know you, but I'm sorry, but I think people across the world know you. I was in US, I was in Dubai. People always talk about your skill, your craft. So please once again give it up, ladies and gentlemen, for Dada. He is one personality who is making us proud worldwide. On that note, sir, I think आज के टाइम पे बहुत बातें होती हैं फिल्म इंडस्ट्री में, टेलीविजन इंडस्ट्री में. नए लोगों को मौका जो है वो सही तरीके से नहीं मिला जाता है. But Dada has been one person जिन्होंने हमेशा
वही स्टॉक खरीदा है जो बिल्कुल मार्केट में नया हो, यानी कि सभी नए फिल्म मेकर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, एक्टर्स के साथ काम किया है. सो सर, वी आर वेरी ऑनर्ड एंड टू टॉक अबाउट दिस. एंड वो क्या चीज आपको प्रेरित करती है कि हमेशा नया स्टॉक पे अपना दाव लगाते हैं? ऑलवेज वर्क विद यंगस्टर्स, व्हिच इज अ ब्लेसिंग फॉर ऑल द आर्टिस्ट्स. नहीं, नथिंग वेरी सीरियसली. आई मस्ट टेल यू, मुझे पता है कि एक एक्टर हो या डायरेक्टर हो, नए जो होते ना, उनकी जो तकलीफें, उनकी जो जर्नी होता है ना, वो बहुत. सो हमारे जो कंपनी है इन आइडियाज क्रिएशंस प्रोडक्शन, वो भी 20 साल की कंपनी है. बट बिलीव मी, इन आइडियाज क्रिएशन हैड नॉट प्रोड्यूस्ड अ फिल्म विद Prashanjit Chatterjee. They always produced a film with the first time director or first time actor actresses. And I'm very proud to say those young people are now really doing not good, they are star. They are big star like Arjun Chakraborty, Mimi Chakraborty, they are big star now. So I'm so blessed that we really tried hard to get young, fresh people who are going to make it big in future. So yeah, so I know the pain when a newcomer comes, and I have faced it. So I think that's the only platform I can give or I can offer from my company for newcomers, for new directors, or a new storyteller to tell them their story. So yeah, that's it. It's a blessing to have a producer like Dada. And of course a co-star and a family member. On that note, sir ने हमेशा all the people who work with, they've been stars. But Star Plus का already एक star है, हर घर का star है, जो अब मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि दादा के हाथ लगने के बाद सुपरस्टार बन जाएगा टेलीविजन का. Give it up, ladies and gentlemen, for UV. इनको हमने तमाम किरदारों में देखा है. एंड स्टार प्लस के साथ आपका एसोसिएशन बहुत पुराना रहा है. हर एक माँ चाहती है कि मुझे ऐसा बेटा मिले. हर वैलेंटाइन पे लड़की इनकी डीपी लगाती है, मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए. और फाइनली कथा जो है, उनके साथ क्या कथा होगी वो हमें जल्दी पता चलेगा, कभी नींद कभी शहर में. मगर यूवी, हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दिस कैरेक्टर एंड क्या होने वाला है? इफ यू कैन जस्ट स्पिल द बीन्स, ज्यादा थोड़ा बहुत. और स्टार के साथ अब और क्या क्या होगा? Okay, so first of all, congratulations to everybody on this beautiful journey that we are going to start. And I welcome all the media fraternity that has come here. And आज आप हमारे इस जश्न में शामिल हुए हैं हमारी शो की लॉन्च पे. स्टार प्लस के साथ मेरा एसोसिएशन काफ़ी पुराना है एक्चुअली. आई डिड अ शो विद देम, ये है चाहते, एंड इट वेंट ऑन टू बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल शोज for Star also and for me also, and it was a turning point in my career. और उसके बाद 4 साल तक किया मैंने वो शो. I think more than 1000 episodes. Wow, 1000 episodes. And अब मैं एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ विद कभी नीम कभी शहद. और आई होप कि ये शो और ज्यादा सक्सेसफुल हो. जैसे कि सर ने कहा कि आई होप दिस गोज ऑन फॉर 2000 एपिसोड्स. और हम सब फैमिली मेंबर्स, जितने भी कास्ट क्रू, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं. एंड या दिस इज अ वेरी डिफरेंट शो. जो हमने आज तक जितने भी शोज आपने टीवी में देखे होंगे, उसमें क्या होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं अपने कैरेक्टर की बात करूं, द मेल लीड इज ऑलवेज पोर्ट्रेड टू बी दिस एंग्री यंग मैन, a typical one-dimensional character जिसको बहुत गुस्सा आता है, and he just he's mysterious, he tries to keep his emotions to himself, and बहुत ऐसा character होता है. But this guy is not that. ये बिल्कुल ऐसा नहीं है. He's totally opposite of all this. और ये बहुत ही he's a fun guy, he's a chill guy, he loves his family, he loves his cousins, बहुत मस्ती करता है उनके साथ. He's a celebrity chef जिसको सब लोग बहुत प्यार करते हैं. He has a huge massive fan following. He's a vlogger. और he doesn't hold any grudges against anybody. वो angry young man बिल्कुल भी नहीं है. बहुत ही fun, chill character है. बस कभी कभी कथा उसकी लाइफ में आके उसको थोड़ा परेशान करती है, जो वो थोड़ा इग्नोर कर देता है. बट he can live with that. And उसके जो young cousins हैं, he has this सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देम, क्योंकि उसको शायद वो प्यार नहीं मिला है जो वो चाहता है कि उनको मिले. और ही इज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हिज कजिन्स.
सो यंगस्टर्स जो भी हमारी फैमिली में है वो उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. दे हैव अ रियली ग्रेट बॉन्ड. बट एट द सेम टाइम जो एल्डर्स है फैमिली के उनके साथ तो थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट है यूवी और उसकी गैंग का, स्पेशली विद द ग्रैंडफादर सर के साथ. सो ही हैज दिस सेंस ऑफ रिजेंटमेंट टुवर्ड्स हिज ग्रैंडफादर. तो कभी ना कभी उनके नोक-झोंक चलती रहती है और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं घर में, बट स्टिल तब भी वो ही इज नॉट डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हिम. ही ट्राइज टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट. I see Dadaji smiling on that. तो दादाजी अभी तो स्माइल कर रहे हैं लेकिन यूवी के सामने स्माइल बिल्कुल नहीं करते. He's waiting to go backstage and show some love. So ये है जो यूवी का कैरेक्टर है और फिर उसके इस कलरफुल लाइफ में कथा आ जाती है जो उसकी लाइफ थोड़ी सी चेंज करेगी फॉर द बेटर. And a bunch of great actors, very senior actors, very young actors. And I think that's the combo we have on the stage. It's not possible, maybe they all will not fit on the stage, but I first of all need to call the head of the family. Yes. हमारे दादाजी. Wow. And one of my favorite actor, दर्शन जी. And अभी अपना राखी जी ने मतलब she told about the contrast to characters. So हमारे जो है ना, whom do I call first? Let's have some guesses or maybe some excitement. Tell me. किनको देखना चाहेंगे सबसे पहले आप? Whom do I call? Brothers and sisters. यूवी और कथा? Come on. Bro. कथा. Bro कथा. धर्म संकट में फंस चुकी है फैमिली. So चलो let's call both of them. Yuvi and कथा. Whoa, ladies and gentlemen, give it up for the star cast, the lead pair, Katha and Yuvi. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं हमारे दादा जो है हमारी फैमिली को इंट्रोड्यूस कर दें हमारी मीडिया फिटर्निटी से, so that जो एक्साइटमेंट है जो बढ़ रहा है, you know, we just take it ahead because we are really excited to meet the family members, right? Yes. It's a big family. It's not a small family. So I think everybody will not fit on the stage, but let's start that Vikram ji is here and my director, the head of the family. Whoa. And Shweta ji, the creative director. And I must call my partner Shumantu Chatterjee also.